you're a natural star, okay? I am not. Why? That's what they call. Okay. Why do you have all the unnatural fighting scenes? Like this is In which film? every movie I'm talking about. Let's say Dasara or That is not. Abhi That the is Saturday. that is the most natural. If you see other Telugu, other films. My point is when I've seen two of your movies. Okay, Yeah. the Saturday one. I like fights in both the films. हाँ. I love the. I like the Saturday one is super unnatural. Yeah. Okay, कहीं से भी Saturday को you get all this power that you I don't can get. kill. I don't get any power. हाँ मतलब your anger. Yeah, but did you watch the whole film? हाँ जो anger होता है ना आपका. हाँ, एंगर मुझे सैटरडे को नहीं आता है. मेरा मम्मी बोलती है, मम्मी की वजह से आप परमिशन दी कि सैटरडे को जाके ये कर सकते हो. हाँ, अगर तुझे किसी पे गुस्सा आया तो सैटरडे के दिन दिखा सकते हो. हाँ, तो आप वेट करते हो. उन्होंने वो रूल लगाया क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंगर इन आवर लाइफ won't stay for no Monday I'm angry with someone. If I had to wait till Saturday and take a call, it will be a wise call. True. Because it will go in because we react immediately. हम गलत करते हैं. तो दैट्स अ मूवी. बट उसमें फाइटिंग सीन्स हैं ऐसे जहाँ पे आप मारते हो और मतलब अनरियलिस्टिक है वो, राइट? ह्यूमन बीइंग. We love them. I love it too. That is cinema. Yeah, that is our cinema. So why do you do it? Like ऐसे अनरियलिस्टिक फाइट्स की होती है. अनरियलिस्टिक में एक भी मीटर रहता है और टू मच या नाइस. ये नाइस मीटर में रह रहे हैं हम. हाँ, टू मच भी होता है कभी कभी, मगर वो स्टार टू मच होता है. हाँ, वो स्टार की इमेज के हिसाब से होता है. अगर ना अभी रजनी सर है, उनका लार्जर देन लाइफ इमेज है. उनका सरिपदा शनिवारम या दसरा लेवल फाइट्स उनसे नहीं चलेगा. वो बस चल रहे, बस 100 लोग उड़ना चाहिए हवा में. वो क्योंकि वो वैसे देखते हैं हम उन्हें. और सी नो अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज I love cinema. I love very realistic cinema. I watch Hollywood films. I watch Netflix, and I appreciate all the films. When I watch it, I stand up and clap even if I'm watching alone. If I see a good shot, if I see a very well written dialogue, I actually even when I'm watching alone, I stand up, I clap, and sometimes I salute also if I like it. But what makes our cinema special, Indian cinema special, is what cinema is to us is very different from what cinema is for someone who is living in US or someone living in some other. People say, no, sir, we're going to make a film with Hollywood standards and all that. I'm saying that's what we need to understand. For us, because Hollywood is obviously advanced technically, or Oscar or whatever, it's not that we are. A lot of people look at us as being away 50 years or 100 years from Hollywood cinema. No, we are not away. For us, this is cinema. Yeah. We need that fight. We need these songs. But will you say it, when you do it well, with even in that, when you make it, when you evoke some emotion in the audience, it works brilliantly well. So I love the fact that we have that little larger than life energy on screen. I love that too. I'm asking what's the reason? Like I am a big fan of. Reason is this because South Indian movies, because and even Bollywood. What are you saying? This happens in Bollywood fully. So I'm saying Bollywood also. That's what I'm saying. Like Bollywood also, I'm like a big fan. South Indian movies, I'm also a big fan. And one of the reasons also कि उसमें जैसे Bollywood में larger than life romance एक्स्ट्रा दिखाएंगे, राइट? तेलुगु में लार्जर देन लाइफ फाइट्स दिखाएंगे, बहुत सारी चीजें होती है. ऑल ऑफ दिस आई लव इट. आई एम नॉट सेइंग दैट आई डोंट. आई एम वन ऑफ द फैंस ऑफ दीज काइंड ऑफ मूवीज. इन फैक्ट I can watch a natural movie, very sincere, serious movie, but that's once in a while. For me, cinema is this. Correct. Right? This like. But what's the reason? क्यों हम इतना exaggerate? क्योंकि मैं सकता. You're the reason. Because you love them. कि exaggerated version, I like that. Correct. So the reason is you. Like most majority. We are trying to impress you. Okay. That is the reason. Yeah. Like I remember when I was a kid, I used to watch this Nagarjun sir's movie. Okay, वो पैर से ऐसे तूफान उठा देते. Like have you seen that? Super. So not super. Mass. One man army. Mass. Yeah. So like वो पैर से वो पूरा उठ जाए. When he's like sit, तो he said boys लोग पीछे उनके लिए चेयर बना देंगे. That is Don number 1. दोनों फिल्म डायरेक्टेड बाय लॉरेंस मास्टर, वो कोरियोग्राफर भी थे. उनका फिल्म्स थोड़ा
नाइस वेरी, पूरा मासेस के लिए, एक्सट्रीम मासेस के लिए। तो हर एक फिल्म वैसा नहीं है, और उनका ऑडियंस वो फुल्ली एंजॉय करते हैं। हाँ। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।